we are going to learn about a Python library which is known as Numpy. It is also called numerical Python, and it is a library which is majorly used for handling arrays. Okay, and it was created by Travis Oliphant back in 2005. He is an American businessman and data science engineer, and it is 50 times faster compared to the normal list which we use in Python, and it is the best library for data science. So in future, if you are pursuing data science and creating models, it is going to help you a lot. It is implemented in Python, but most crucial operations are done in C and C++. And now we'll take a look at uses of NumPy. So some of these uses I'm going to teach you in the session ahead. Number one is arithmetic operations. We can do mathematical operations here. Statistical operations, bitwise operators, copying and viewing array, stacking, searching, sorting, and counting. Mathematical operations, okay. Broadcasting, linear algebra, and matrix operation. Matrix operation is a very important thing, okay. So first of all, we'll understand why we are using arrays compared to list. So if you don't know, Python is in Python everything is an object. Okay. So in Python, when you store data in list, it does not store the data directly into the list. Rather, it points toward the data which is already set in the memory. Okay. But NumPy arrays store data in a continuous block. All the items are right next to each other. You can see here how the contiguous memory looks like. In NumPy, when you create an array, all the elements are stored side by side. Okay. Now, first of all, if you want to do anything in Python, you need to import a library. And today we are using NumPy, so we are going to import NumPy, and we use an abbreviation which helps us to write the code faster in the future. You can take NP, NL, NS, whatever you want, but I'll prefer that you should take NP only, because it will help someone else who will read your code to understand what NP stands for. Okay. Now we need to understand first what is an array. Okay. So array is a data structure which looks like something like list, and you can see here we have the indexing and all the data columns. Okay, all the data which is in the array. Okay. Now we are going to create a NumPy array using a Python list. I hope on the day one of the trek you have learned what a list is. Okay. So we have a function known as np.array. np.array is a function which helps you to create an array. Now you can see here that in this I have added a list of 4 integers, 1, 2, 3, 4. And when I run this, you can see that an array is created with 1, 2, 3, 4 elements. Okay. Now with this list, we can also add a data type of our own type. Okay. So for example, I am adding float.32, and I want that all these elements in this list should be of float data type. Okay. So when I run this and then I run this, you can see that all the elements of this array are now of float data type. Okay, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. So we can see that we can also give the data type of our own choice. Okay, and what happens if we don't give a data type? Okay, so it has a default data type also. So we can see here, and we can see that default data type is int64. But if I make one of the elements of this a float, let's see what happens. We can see that now the default data type is float64. Okay. Now, as I told you, this is a one-dimensional array, which means in this we have only one list. You can see how 1D looks like. Okay. And we can now have, and we also have a function known as array.ndim. Ndim stands for nth dimension. It tells you that what dimension the array is. So when I run this, you can see it gives us the answer 1, because this particular array which we have inserted here or we have got here is a one-dimensional array.
Now we'll look at how to access elements using an index. Okay, so as I told you, the array starts the index from 0 and goes till n minus 1, and n here is the number of elements in this array. Okay, so when I run this, you can see that it is giving me the first element of the array. Okay, you can see that first element is 1.0 and it is giving me the first element. If I replace 0 with 3, let's see what happens. And you can see that we are getting 4.0, which is the fourth element of the array, but it is at the third index. Okay, now what will happen if we have a number? Okay, now you can see here I am getting error when I am putting 4, because I told you the indexing goes from 0, 1, 2 and 3. So there is no element at the fourth index, so that's why it is giving us an error. Okay, it is giving an index error. Now we can, okay, one second, now we'll go to a 2D array. Okay, and as I told you, it is a two-dimensional array. It looks like something like this. Okay, in this particular thing we have a list, and inside that list we have different lists. Okay, so it makes a 2D array. So we can see that a 2D array looks something like this. Okay, now we can check its dimension, and we can see that we are getting a 2 answer. Why? Because I told you this is a two-dimensional array. Now we'll understand that how do we access an element of a 2D array. Okay, so we can see that in this we have two particular lists. One is this outer list and one is this inner list. Okay, so to access any element of a 2D array, we need two inputs. Okay, two parameters, I and j. Now you can see that I am using 1 comma 1. Now let's see what element we are getting, and we are getting the element 5, because if you see this particular list, you will understand that this first list is at the 0th index and this second list is at the first index. Okay, and in this first index list, fourth is at the 0th index and fifth is at the first index. So when I do 1 comma 1, it gives us the element which is at the first index of the list which is on the first index of the outer list. Okay, in the same way, when I run this 1 comma 2, we are getting 6. So we understand this first I stands for the list, and the second index j stands for the element in the ith list of the first list. Okay, so this is a 2D array. Now if you want to see the shape of this array, we have a function known as array.shape. This particular function helps us to get the shape of the array. Okay, so as you can see, this is a 2D array of a shape 2 into 3. So we have two lists in the first list and three elements in the inner list. So it gives us the shape 2 comma 3. And when we run the function array.size, it tells us how many elements are there in this particular array. So we can see that we have 6 total elements, 1 2 3 and 4 5 6. So it is giving us the answer 6. If we run the same for the 1D array which we had created, we can see the shape, and when we run this we can see it is 4 comma 1, because actually it's not showing 1 because it's only a 2D, it's 1D array, so it will give us only the length of the particular array, which is 4 here. And when we'll run the array.size, it is giving us 4 because there are total 4 elements in this numpy array. Okay, now what is the difference between a data frame in pandas and a 2D array in numpy? Okay, I'll address this afterwards. Now we can see here how to create a 3D array. Okay, so now you can see that this green list has two brown lists inside them, which also have two blue lists inside them. So there are total 3 lists. Okay, one outer list inside which we have two small lists, further inside which we have two another list. Okay, so when we run this, one second, sorry. So we can see here that we have created a 3D array. And as I told you in the 2D array, that for indexing a 2D array element, we need two parameters. In the same way, to access an element, what will be the output for dot shape? So for dot shape, you get the shape of the
array. For example, if you have a cuboid, okay, so it has three parameters: length, breadth, and width. So it will show you three of the different parameters. Okay, I'll show you ahead. So now the follow-up question. Okay, wait, I'll answer it afterwards. Now, as I told you, to access any element in a 3D array, we need three parameters. So when I run 1 comma 2 comma 2, sorry, when I run 1 comma 1 comma 2, it is giving me 12. Why? Because this is the first list. Okay, in that we are accessing the first list, which is this one. Further, in which we are accessing the, sorry, not the first list, this is the 0th index and this is the first index. So in the first index, we are further accessing the first index list, which is this one, in which we are taking this element at the 2 index. So 10 is at 0th index, 11th is at the first index, and 12th is at the second index, because of which we are getting answer 12. Now we'll see what dimension it has. Okay, so when we run this, we are getting an answer 3. This shows us that the array we have created is a 3D array. Okay, and when we see the shape, we'll see 2 comma 2 comma 3. Why? Because this outer list has two lists inside it. Both the two lists have further two lists inside them, and these lists have three elements inside them. That's why we are getting shape 2 comma 2 comma 3. And when we do array dot size, you can see that there are total 12 elements. If you can see it, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So array dot size gives us total amount of elements present in that particular array. Okay, and as I told you, you can specify the data type which you want. Now we'll look how to create a numpy array using a dictionary. Okay, one second. So here you can see that I have created a array using a dictionary. Okay, now I want to tell you one thing, that whenever you create a array using a dictionary, its data type will always be an object. Why? Because dictionary itself is an object oriented data type. Okay, now we'll have a look how to create a numpy array using a set. So first of all, I want to tell you all that set is a particular data type which does not have repetitive elements. Okay, it will not have a repetitive element in it. Okay, so now let's see what we are getting. So here we have got an array of elements 1 2 and 3, and this also has a data type object. So set and dictionaries both have their default data type as objects. Okay, so you cannot define here the data type. For example, if I define the data type here as int 32. Man, I think maybe you should address the doubts first because they're Okay, piling up a bit. So after this one, after this specific cell, you can cover it. okay, for sure. Okay. So you can see here that you cannot give a data type to a set and even to a dictionary, because both of them have the data as object. Okay, now let me see a few doubts. Okay, how the output will change. Okay, one second. Please share the collab file. What is the difference? Okay, one second. Let's have a look what will happen if we have a different size data type. Okay. So it will provide a error because of all the elements of every dimension should be equal. Okay, so it will give us a error. It will not create an array only. Okay, so I hope Vinayak your doubt is solved. Okay, I think Vinayak had a different. Okay, yeah, fair enough. Okay. Vinayak, if you can on your mic, will be helpful. Yeah, I asked the same doubt. It's clear now. So it's Okay. clear, right? Yes, yes. Thank But you. you can run this without keeping that whole thing as a list as well. Show that will be. हाँ अच्छा, हटा के
अच्छा, रन इट, ये भी देगा। hmm. So I hope Vinayak your doubt is clear now. What will be the output for Yes, the yes. length of the array? Will it count the number of subarrays or number of elements of individual subarray? So for length, for total size, it will count all the elements, okay, of the numpy. If I run this and then we run this particular size one, it will count all the elements of the smallest dimension, okay. Harshil, I hope your doubt is clear now. Okay, so now we'll see that what happens when we have duplicate or repetitive elements in a numpy array while we are using a set. So as I told you, set only has distinct elements itself. So when I run this, you can see that they have taken 3 only once and not twice, because as I told you, set only keeps distinct elements in itself. Okay, now we can see how we can update values of numpy array based on its indices. Okay, so when I am declaring this array, I have elements 1, 2, 3, 4 and 5, but then I am making a change at index equals to 1 and I am adding an element 500. So when I run this, you can see that earlier the array had elements 1, 2, 3, 4 and 5, but after I made this change, now the elements are 1, 500, 3, 4 and 5. Now I'll try to add a string element in the array and let's see what happens. So it is giving me an error. Why? Because we can store different data types in Python in NumPy, but we cannot store heterogeneous data types. So अगर आपने एक array बनाया है तो उसमें या तो सब string हो सकती है, या तो सब integer, या तो सब float. आप एक float और एक string को एक साथ एक NumPy array में नहीं यूज कर सकते, ठीक है? Now we'll look forward to some functions of NumPy. Okay, so the first function we have is the append function. Now append function has two parameters, one is the array and other one is the element, and append function appends the element to the last of the array. So when I run this, you can see that this is the earlier array. After we have used the append function, this is the new array, and 600 is appended at the end. So as I told you, it takes two parameters, one is the array and other one is the element. Now we have an insert function. Insert function inserts a particular element at the given index. So this has three parameters, the array, the index and the element. We'll run this and you can see that earlier the array had 1, 500, 3, 4, 5 and 600. Now at the first index we have added a 0. So this is the 0th index and this is the first index where we have added 0. If I do this and I run this, let's see what happens. So you can see that the first index we have added 30. Now we'll see some special functions which help us to create some special types of arrays. Okay, so the first function we have is numpy. Okay, how can we store key and values of different data type in an array using a created using a dictionary? How can we store key and values of different data types in array? One second. As I told you, in dictionary, all the data is in object form. So you can store different data types in that because all the data is in object form. The data type is object, not int, string, otherwise. Okay. Sujal, I hope your doubt is clear now. Now we'll see some functions. For example, we have this function np.arrange. So np.arrange makes a numpy array starting from the first index till the n minus 1 index. Okay, we can see here that when I run this, it starts from 4 and goes till 15. So arrange function helps us to create an array of consecutive elements from the first index to the n minus 1 of the second given index. Okay, now I'll run here
and we can see that, okay, if we don't give two indexes or two parameters, it will create an array starting from 0 to n minus 1 of the given index. Okay, so here we have given 16 and an array has been created from 0 to 15, which has 16 elements. Now we'll see one more property which is known as array.reshape. Okay, so this particular function helps us to change a particular array into a different shaped array. Sorry, once again I'll clear this. So in numpy.arrange, you can give three parameters: the starting element, the ending element, and the jump which you want to take. Okay, so you can see here that we have started from 4 and we are taking jumps of 2. So we have 4, 6, 8, 10, 12, and 14. We have total 6 elements here between 4 to 16, and all of them have a gap of 2. And now we'll look forward to the other function which is known as array.reshape. Okay, so array.reshape is a function which helps us to reshape a particular array into a shape of our choice, but we need to make sure that total number of elements in both of the arrays should be equal. So you can see that here that we have total 6 elements here. So now I want to reshape it to a 2 comma 3, which I want to make it a 2D array. And you can see that 2 comma 3 also add and multiplies to 6. So we can do this because the total elements in this list and this list are equal. I'll run this and we can see that here we have created a 2D array and we have reshaped this particular array into this array. Now what will happen if I add 4 here? So you can see that it is giving us an error because in this particular case we need total of 8 elements and not 6. Now it will not give us an error. Okay, you can also do 3 comma 2. Also do now we'll look at array.flatten. Now this is one more function which helps us to convert a 2D array or a 3D array into a 1D array. So you can see here that in particularly now in the array we have a 2D array of 3,2 size with all these elements. When I run this array.flatten and I see how my array looks, so you can see that here we have created an 1D array, okay, with all these elements. The same thing happens when you use the function array. If we use reshape, if we use dot reshape 2, will it allocate the items automatically? I'm not able to understand what your doubt is. See, it will throw an error, okay, because as I told you, it's the total elements of when we use array.reshape should be equal to the total elements which it had earlier. Okay, now we'll see what array.ravel does. Okay, so array.ravel also does the same thing as array.flatten. It converts a 2D array into a 1D array. You can see here. Flatten and arrange same now. No, flatten helps us to convert a 2D array into a 1D array, but arrange helps us to create a array of elements which we want. For example, you can see here that we have started from 4 and we have went till 16. Okay, now we'll look at some more functions which helps us to create different types of arrays. Okay, so now here we have a function numpy.ones and it takes a number here n and creates an array which has n number of ones. Okay, it has n number of ones and all of these are of float data type. You can see here if I change the number here and I make it 1, sorry, 2,
we can see that we have got an array which has two elements and both of them are 1 only. In the same way, np.zeros is a function which helps us to create a numpy array of all zeros. It only has zeros, okay? And we can also create a 2D array of the same. We can create a 2D array all of zeros. We can also create a 2D array of all the ones. Okay, as you can see, we have created a 2D array which only contains 1. Now we are going to see that we can also give the data type of the element. As I told you in the first case when we were using numpy.array function, that you can give the data type which you want. So the default data type of np.ones is float, but if you give it the data type int.32 or int64, it will store the data in terms of integer. Okay. Now we'll look at one more function which is numpy.identity. So I hope that all of you know what an identity matrix is. If you don't know, an identity matrix is a matrix whose all diagonal elements are 1 and other elements are 0. Okay, so as you can see that every index n comma n has value 1 and other indexes have 0. So 0 comma 0 has 1, 1 comma 1 has 1, 2 comma 2 has 2, and 3 comma 3 has 1. Okay, so in this way we can create a identity array. Okay, now we are going to look at some more functions. The first function is linspace. Okay, so linspace is a function. When we run this, it creates an array which has total 12 elements between 2 to 9, and all of these elements are equally okay, so all of these have equal distance. For example, 2 and 2.63 has a difference of 63. In the same way, 2.63 and 3.27 have the same difference of 63. 3.27 and 3.9 have the difference of 6.63. So all the elements of this particular array have equally spaced values, okay, between 2 to 9. If I have 1 to 0 to 10 and 10 elements, okay, so all these elements are equal, have equal difference from each other. You can see here. Okay, and in the same way we can give here the data type. Okay, so when we provide the data type as integer, it rounds off to the closest integer. Okay, as we saw, we were getting 0, 1.1, 2.2, so it is rounding off itself to the closest integer, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now we have one more function known as numpy.empty. In this particular case, it creates a 2D array of random numbers, and we have to provide the indexes of the 2D array or the shape of the 2D array. Here I have provided 4,6. So we have 4 lists and all of them have 6 total elements, and all of these are random numbers. Every time you will run this, you are going to get random numbers. Okay, so yeah, as I told you, this particular function provides us random numbers every time. Now we are going to look at how can we use some functions as sum, transpose, flat in the arrays. Okay, now here I have created a 2D array of, sorry, yeah, I have created a 2D array of shape 2, 3, and now I want to run this particular cell. I'll run this, and we can see that we have created a 2D array of shape
2 comma 3. Depends on calcium. Okay. So as you can see here that we have created an array of 2 comma 3. Okay. Now when I run array.sum x is equals to 1, sorry, x is equal to 0, it gives us sum of each and every row of this particular array. So you can see that this is the first row which has elements 1, 2 and 3. Sorry. It will give us the sum of all the rows. So this is the first row 1, 4 and 7 whose data adds up to 12. Then we have 2, 5 and 8 whose data adds up to 15, and 3, 6 and 9 whose data adds up to 18. Okay. And in the same way, when we run array.sum x is equals to 1, it takes every column 1, 2, 3 which is 16, 4, 5, 6 which is 15. And once again empty array example. Okay, one second. So if you see here in empty array, when I run this, it gives us random numbers. Okay, if you can see, it provides us an array of 8 into 8 size with random numbers. If you can see, this is what please explain empty array again. Okay, so mp.empty, this particular function provides us random numbers. Okay, one second. So you can see here that I have given an input of a 2D array of shape 5 comma 8, and this particular function provides us with random values in this particular 2D array. If I change this to 5 comma 5, you can see here that I have got random values in this 5 comma 5 array. Okay, this is a 2D array. Now we'll look at array.transpose. So in array.transpose, we are provided with the transpose of the given matrix. As you can see here, what is the use of an empty array? So you can create an empty array of random elements, and then you can assign values to that particular what I can. Okay, so empty array is used when you don't want any null. Please repeat some of the axes. Okay, I'll repeat that. Okay, so here as you can see that I have created a 2D array, okay, of shape 2 into 3. Okay, sorry, of a shape 3 into 3. We have 3 lists inside the main list and 3 elements in each of the sub list. Okay, now when I run array.sum and x is equals to 0, it sums up all the elements of the rows. So we have 1 here, 4 here and 7. So when you add all these, you get 12. Then we have 2, 5 and 8. If you add them, you get 15. And when we add 3, 6 and 9, we get the answer 8. In the same way, when do arrays.sum x is equals to 1, it provides us the sum of all treated as a row or a column. Okay, so if you have seen in the pandas one, you will understand that all the rows are treated as a column and not a row. Okay, and the rows are of the same first index. Okay, so 0th index of the first element, 0th index of the second element, and 0th index of the 7th element is treated as a row and not as a column, and each list is treated as a column. Okay, and when we have x is equals to 1, it adds up all the columns. Okay, and then we have a function arr.t. Now array.t is a function which is used to get transpose of a matrix. Okay, in transpose of the matrix, we change the rows and the columns. If you can see,
Earlier we had the column 1 comma 2 comma 3, but now we have 1 comma 2 comma 3 in the rows. So transpose helps us to convert rows to columns and columns to rows. Okay, you have studied this in the matrix chapter, which you might have had in your 12th standard. Now you can run arr.flat. Now arr.flat is a function which helps us to flatten this particular 2D matrix. And when we run for j in arr.flat, we get each and every element. Okay, you can see that all the elements were 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and you can see that in this particular case I have made no changes in the array. I have just printed array.transpose. If I make changes in this particular case and then I'll run arr.flat, you can see that I'm getting 1 4 7 2 5 8 and 3 6 9. Okay, now we'll look at the function arr.nbytes. This particular function provides us the information that what or how many number of bytes are taken by the array to store its data. Numpy is used only in coding. Data. So if you see that a numpy array will only have same type of data. Two elements of a numpy array cannot be of different data types. It will only happen in set or dictionary, because in that particular case the data is treated as an object and not as a integer or a string data type. Okay, and n byte stands for how many number of bytes that particular array stores. Okay, so as we know that one integer stores 4 bytes. Okay, one integer has a storage capacity of 4 bytes. So we can see that in this particular case we have total 9 integers in this numpy array. Okay, so when I run array.nbytes, it gives me, one second, oh sorry, one integer has 8 bytes of storage. Okay, so this particular case we have 9 integers, and when I run this particular thing arr.nbytes, it will give me answer 72, because 9 into 8 is 72. And when I run array.size, as I told you earlier, array.size is going to give me the answer that how many elements are there in total. Okay, and it counts all the elements in the smallest index, or the most inside list which we have in this particular case. It counts total elements of those lists. So as I told you, in this case we have 9 elements. That's why arr.size gives us 9, because there are total 9 elements. Now we are going to understand two major functions. One is argmax or argument max, and other one is argument min. These two particular functions provide us the index of the maximum value. For example, I have a doubt that can we use call span or row span in code? Vedant, if you can answer this particular question. This is in Excel, I think. तो इधर का अलग रहता है थोड़ा, होल स्पैन करके, तो इट्स मोस्टली इन एक्सेल. तो यहाँ के फंक्शंस थोड़े अलग रहते हैं. सानिका विल हैव टू चेक इट आउट वंस एक बार. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मतलब what you're expecting your data to work around with. Yeah, correct Vedant. I don't think call span और row span करके कोई inbuilt function है numpy के लिए, वो excel में है. So I think we should continue. So as I told you that argument max or argmax provides us with the index of the maximum value. Okay, so once again, when I run this particular thing, we'll understand that we have the maximum value 9. Okay, which is at the 8th index, because I had done arr.flat. Okay, so we have this index 0 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so argument dot max provides us the index of the element which is of the highest value. In this case it is 9, that's why we are getting 8. In the same way, argument min provides us with the index of the minimum value, which is 1 in this case, which has index 0. Okay, now we have an option argument dot sort. When we run this, we can see that it has sorted. It provides us with the index which will have the sorted array. Okay, in my case I already have a sorted array. I can make the changes here. And now I'll run this. So we can see that the first list here, if we sort this, the first index is the smallest value, then we have the 0th index, and then we have the second index. So now we'll run this particular case and we can see. So you can see that here the first index of the first array has the smallest value, which is 1. Then we have the 0th index, which has the value 2. And then we have the second index, which has the value 3. Same for the second array. And as you can see in the third array, it is already sorted, because of which we are getting answer 0, 1, and 2. So these were the 3 argument based functions which provide us with the value of the indexes. Okay, now we will have a look at basic mathematics which we can do using Numpy. Okay, so first one is matrix addition. So when we'll run this, we can see that we are getting the answer 2, 3, and 5, 8. So it has added 2 of these particular matrices. Okay, it has added these 2 matrices. आर्क सॉर्ट वापस कर ले पर. अच्छा, एक मिनट वापस करूं. ओके, सो यू कैन सी दैट दिस इज, एक मिनट मैं इसको नीचे ही लिख लेता हूँ, इजी. ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी दैट वी हैव वैल्यूज 2, 1 एंड 3. अब 2 का इंडेक्स है 1, 1 का इंडेक्स है 0 और 3 का इंडेक्स है 2. तो जब मैंने arr.arc sort यूज किया, तो इसने इस पर्टिकुलर लिस्ट को सॉर्ट किया पहले और फिर मेरे को प्रोवाइड किया उसके इंडेक्स के साथ. तो अगर मैं यहाँ पे एक बार कोड लिखती हूँ, y इक्वल टू 2, 1, 3, ये ले लूँ और मैं इसको सॉर्ट कर दूं. ठीक है, एक मिनट, मैं इसको सॉर्ट कर दूं. अरे यार, एक मिनट, क्या इशू आ रहा है, एक मिनट. हाँ, सॉरी. नाउ यू कैन सी कि मेरे को एक सॉर्टेड लिस्ट मिल गया है जो है 1, 2 और 3. और अब ये 1 का अगर आप इंडेक्स देखो इन दिस पर्टिकुलर केस, तो यहाँ पे 1 का इंडेक्स है 1, 2 का इंडेक्स है 0 और 3 का इंडेक्स है 2. तो यहाँ पे अगर आप उसे कंपेयर करो इस पर्टिकुलर लिस्ट के साथ, सॉरी एरे के साथ, तो आप देख सकते हो कि जो इंडेक्स है 1 का वो सबसे आगे है, फिर 2 का इंडेक्स है और फिर 3 का इंडेक्स है. तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरे को एरे वाइज सॉर्ट करता है और फिर उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की इंडेक्स प्रोवाइड करता है जो हमने मेन एरे में यूज किया है. ठीक है, वापस अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 का इंडेक्स है 1, 2 का इंडेक्स है 0 और 3 का इंडेक्स है 2. तो सॉर्टिंग के बाद वी आर गेटिंग 1, 2, 3. तो यहाँ पे आप उसके इंडेक्सेस देख सकते हो 1, 0 एंड 2. तो आर्ग्यूमेंट डॉट सॉर्ट हर सब एरे को सॉर्ट करता है और फिर उसके इंडेक्सेस हमें प्रोवाइड करता है. आई होप ये डाउट क्लियर हो. सुहास, इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है. नाउ जैसे कि मैंने बोला, हम बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दिया है और ऐसा कुछ नया एरे बन गया है। 2 मैट्रिक्स को नहीं, 2 एरे को मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमारे पास एक नया एरे बन गया है जिसमें ये सब एलिमेंट्स है 2, 3, 5 एंड 8। ठीक है, ओके। और अ, ये हाँ मान एक बार तो आर्ग मैक्स के इसमें जा सकता है क्या? हाँ उसमें आई थिंक सूजल हैज अ डाउट कि 2D एरे यूज किया तूने। हाँ 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 हाँ, तो आई थिंक वो फ्लैट करने के बाद यूज किया है हाँ, सूजल। वही फ्लैट करने के बाद यूज किया तो था दैट इज नॉर्मली व्हाई बताऊंगा। उसका आउटपुट 2 ही आएगा। डायरेक्टली 2D एरे यूज नहीं किया है उसके लिए। 2D एरे रहता भी तो हर एक एलिमेंट का अलग से देता है वो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड मैं क्लियर करता हूँ। आर्क डॉट मैक्स में इंडेक्स नहीं आता एक्चुअली। आर्क डॉट मैक्स में उस एलिमेंट, वो एलिमेंट कहाँ पे अकर कर रहा है पूरे एरे में वो शो करता है। ठीक है, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर केस में जो 8th एलिमेंट है ऑफ द एरे वो हाईएस्ट वैल्यू होल्ड कर रहा है, इसलिए वो 8th एलिमेंट शो कर रहा है। ओके, क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मली भी रन करूँ एरे को यहाँ पे करके, तो भी वो वही आंसर देगा। ओके, नहीं नहीं, फ्लैट उसके साथ ही आ जाता है शौर्य। मतलब लाइक इट विल रन फ्लैट फर्स्ट अंदर से सब्सिक्वेंटली एंड देन इट विल अप्लाई argmax। अच्छा हाँ वो भी है, राइट। नाउ विल सी, ये रीशेप वाला फंक्शन तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है? वापस रन कर देता हूँ मैं ARR.1। तो यू कैन सी कि फर्स्ट केस में यू कैन सी दैट फर्स्ट केस में 4 एलिमेंट है 3, 4, 5, 6 और फिर हमने उसे रीशेप कर दिया है 3, 4 और 5, 6 में। तो इन दोनों का टोटल एलिमेंट्स और जो ओरिजिनल एरे है उन दोनों का टोटल एलिमेंट्स सेम है। सेम फॉर दिस टू। नाउ हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ एक नज़र डालेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो आई होप तुम लोग ने सबने एक नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है कि वो कैसे होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ द फर्स्ट एरे वो जाके मल्टीप्लाई होता है सेकंड एलिमेंट से, सॉरी सेकंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से। फिर 8 मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट, अगर मैं इन दोनों को लूँ एरे 1 जो कि 3, 4, 5, 6 है और एरे 2 जो 7, 8, 9, 10 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से जो कि होता है 21। एक मिनट, ये मैंने कौन सा ऐड किया, एक मिनट मैं रन करता हूँ पहले। एंड यू कैन सी जैसे कि मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो हमें 21 मिलेगा। फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 9 से तो हमें 45 मिलेगा। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से जो 32 मिलेगा। और 6 मल्टीप्लाई होगा 60 से, सॉरी 10 से जो हमें 60 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एडिशन नहीं होता जो बुक मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वे में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। वापस अगर समझाऊँ तो हर इंडेक्स अपने दूसरे इंडेक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्चुअली सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल एरे मल्टीप्लिकेशन है जहाँ हम दो जो एरे ले रहे हैं उनके सिमिलर या फिर सेम इंडेक्स वाले एलिमेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रिपीट करूँ तो 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 9 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से और 6 मल्टीप्लाई होगा 10 से। और इस वे में हमें हमारा फाइनल मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स मिल जाएगा। नाउ एक और फंक्शन है np डॉट स्क्वायर रूट। जब np डॉट स्क्वायर रूट हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, हर एलिमेंट जो हमने यूज़ किया है उन सबका स्क्वायर रूट एक नए एरे में भर देता है। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो यू कैन सी हमारे पास ये सब आंसर आ, एक मिनट, हाँ रुको मैं यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट करता हूँ। अरे 9,36 और इसको मैं ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 7 और 6 मिल गया है जो स्क्वायर रूट है 49 और 36 के। ठीक है, अगर आपको समझाओ मैंने इसमें क्या किया।
मस्ट सॉरी, वो मैंने जैसे कि बोला, इट वाज नॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बट इट वाज एरे मल्टीप्लिकेशन, जिसका हर इंडेक्स दूसरे एरे के सेम इंडेक्स वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर थर्ड एरे में ऐड हो जा रहा है. ओके, अब वी कैन सी दैट Hamza, I think you had a similar doubt, right? तो वो समेशन में भी सेम लॉजिक लगेगा. what if both of them do not have the same data type? वो एक अच्छा क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्या होता है. Is there an option for, हाँ वो डॉट करके आता है उसका अलग से. डॉट किया है हमने, मान डाला है क्या? नहीं नहीं. हाँ तो डॉट का अलग से आता है. You can apply that as well. np dot. And Hamza, you had a doubt that अगर उसका शेप डिफरेंट है तो वो नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, वो एरर थ्रो कर देगा. ओके, if it is clear now. And then we have simple functions arr.max, arr.min. इसमें हमें उन पर्टिकुलर एरेज के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलते हैं. ओके, जैसे कि अगर मैं इसको रन कर दूं तो हमने देखा था कि ARR1 में हमारे पास 3 4 5 6 7 8 टोटल 6 वैल्यूज है और 8 इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो हमें यहाँ पे 8 मिल रहा है. फिर अगर मैं arr1.min यूज करूँगा तो देख सकते हैं कि 3 सबसे मिनिमम वैल्यू है इस पर्टिकुलर एरे में, तो हमें वो मिल जाएगा. ओके, एंड arr.sum सब एलिमेंट्स का सम दे देगा. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 सब एलिमेंट्स का टोटल सम हमें शेयर कर देगा. ओके, तो ये मैक्स, मिनिमम और सम है. आई डोंट थिंक ये उतने डिफिकल्ट वाले फंक्शंस हैं, ये बेसिक फंक्शंस है थोड़े. ओके, अब हम थोड़ा चेक करेंगे और फंक्शंस को देखेंगे, जैसे कि np.where फंक्शन. अब np.where फंक्शन में हम एक पर्टिकुलर कंडीशन थ्रो कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं np.where arr1 ग्रेटर देन 3 डालूंगा, तो अगर हमें दिखेगा कि 1 मिनट 0101, एक सेकेंड, पहले हम डालते हैं arr1 = 3 और हमें देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है. तो हम देख सकते हैं कि ये हमें arr0 और array 0 दे रहा है, यानी कि ये हमें ये कह रहा है कि 0,0 इंडेक्स पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो यू कैन सी दैट 0,0 कंडीशन पे वैल्यू सही में 3 है, तो वो हमें शो कर रहा है कि इन पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये कंडीशन ट्रू है. अगर मैं डालूँ arr1 = 3, तो देखो हमें क्या मिलता है. तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि 0,1 0,2 1,0 1,1 एंड 1,2 इन 5 इंडेक्सेस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो कि ट्रू है. अगर हम 0,0 को हटा दें तो बाकी सब इंडेक्सिंग पे ये कंडीशन ट्रू है कि सबकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है. ओके, हाउ टू यूज इट, np. previous works. ओके, एंड सेम वे में हमारे पास फंक्शन है np.non0. तो ये हमें उनकी वैल्यू देगा जिस भी इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 0 नहीं है. जब मैं इसको रन करूंगा तो हमको दिख सकता है कि 0,0 0,1 0,2 1,0 1,1 एंड 1,2, यानी कि सब ही उसमें 0 नहीं है वैल्यू. यू कैन सी यहाँ पे सब में वैल्यू 0 नहीं है. बट अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं इस एक वैल्यू को 0 कर दूं, सो यू कैन सी कि यहाँ मैंने फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को 0 कर दिया है और देन हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा हम देखते चलो. सो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि हमारे इसमें 0,0 नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू 0 है उस पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो हमें यहाँ पे वो इंडेक्स नहीं मिला है. और बाकी रिमेनिंग 5 इंडेक्स मिल गए क्योंकि उन सब पे वैल्यूज नॉन जीरो है, 1 2 3 4 5. तो आई होप आप लोग को वेयर और नॉन जीरो फंक्शन समझा होगा. अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, सो वेयर फंक्शन जो है वो पर्टिकुलरली हमें हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट पे कंडीशन चेक करने के लिए. ओके, सो मैं np.where arr ग्रेटर देन अगर 1 लिखूं मैं इस पर्टिकुलर केस में,
तो ये हमें उन सब एलिमेंट्स की इंडेक्स देगा जहाँ पे ARR1 में वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सो अभी हमने देखा ARR1 कैसे दिखता है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो 0,0 और 0,1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं है। तो उन दोनों को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर यहाँ मैं लेस देन 1 करूँ तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा विच इज़ 0,0, क्योंकि वहाँ पे ही वैल्यू 0 है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में ही वैल्यू लेस देन 1 है। ओके, अब हम ये देखते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देख लो कि मैंने 0,1 पोजीशन पे 0 ऐड किया है, 0,2 पोजीशन पे भी 0 ऐड कर देता हूँ, और फिर हम जब इसको रन करेंगे तो हमें दिखेगा 1,0 1,1 और 1,2 इन तीनों पोजीशन पे ही नॉन जीरो है, क्योंकि पहले 0,0 पे ऑलरेडी 0 था, 0,2 पे भी हमने 0 डाल दिया, और इससे पहले जब मैंने 0,1 वाला कोड रन किया था उसमें भी हमने उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे 0 ऐड कर दिया था। तो जो नॉन जीरो फंक्शन है, अभी यहाँ पे रुको मैं आपको एक ARR1 रन करके दिखाता हूँ। सो यू कैन सी कि इन तीनों प्लेसेस पे हमने 0 यूज़ किया है, इसलिए जब नॉन जीरो फंक्शन हम रन कर रहे हैं तो हमें 3 इंडेक्स मिल रही है, 1,1 सॉरी 0,1, 1,1 और ये 1,2। ये 3 एलिमेंट्स है जहाँ पे हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स मिल रही हैं। तो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। अभी जिसको भी जो भी डाउट है पूछ सकता है, वी आर हियर टू क्लियर। तो आप पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट है। Okay, can you explain non-zero once again? So, नॉन जीरो को आप ऐसे ले सकते हो कि अगर मैं ARR where यूज़ करूँ और वहाँ पे कंडीशन डालूँ दैट ARR1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस को रन करूँ कि जो भी एलिमेंट का वैल्यू है वो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो यू कैन सी कि इन दोनों में सेम आंसर आ रहा है। तो नॉन जीरो का मतलब सिंपल है कि जो भी एलिमेंट विदाउट जीरो है ये हमें उन एलिमेंट्स का इंडेक्स दे देगा। यहाँ पे आप इस अगर रुको मैं इसको है ना एक सिंगल एरे के साथ आपको रन करके दिखाता हूँ। ARR1 इक्वल्स टू 0,0,0,0,0। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो कि सब एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो ये हमें एक एम्प्टी एरे शेयर कर रहा है, एम्प्टी इंडेक्स इसका, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को 1 कर दूँ, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे इसको रन करते हुए आंसर हमें मिल रहा है 0। अगर मैं थर्ड इंडेक्स पे कोई एलिमेंट को नॉन जीरो कर दूँ तो हमें इंडेक्स मिल रहा है 0,3। सेम वे में अगर इसको मैं एक 2D एरे बना दूँ, एक मिनट, इसको मैं एक 2D एरे बना के रन करूँ तो 0,0 और 0,2, ये 0,1 वाला इंडेक्स है और 0,2 वाला इंडेक्स है, इन दोनों इंडेक्स पे हमें नॉन जीरो वाली वैल्यू मिलती है। ओके, अगर आपको समझ गया हो तो। एक्सप्लेन इंसर्ट फंक्शन। ओके, सो इंसर्ट फंक्शन जो है वो फंक्शन हमें हेल्प करता है टू इंसर्ट अ वैल्यू एट अ पर्टिकुलर गिवन इंडेक्स। ओके, एक मिनट मैं ऊपर जाता हूँ। तो हाँ, ये पर्टिकुलर केस अगर आप देखो तो हमारे पास एक एरे है जो कि ऐसा, एक मिनट मैं इसे रन कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास एक एरे है 49 और 36 एलिमेंट्स वाला, और इसमें मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे 30 को ऐड कर दिया। तो ये 0th इंडेक्स है, इसके बाद जो फर्स्ट इंडेक्स था उस पर हमने 30 को इंसर्ट कर दिया और 36 को पुश कर दिया सेकेंड इंडेक्स पे। अगर यहाँ पे मैं 0th इंडेक्स पे इसे ऐड करूँ तो देखो क्या होता है।
तो आप देख सकते हो कि हमने 0th इंडेक्स पे भी 30 को ऐड कर दिया है. सो यही था इंसर्ट फंक्शन. अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट. यस, यू कैन लीव सानिका. और किसी को इफ यू हैव एनी डाउट्स. एक मिनट. Can you help visualize 3D array? What about 2D and 3D array? Kshitija, if you can elaborate, it would be helpful. Can you help visualize 3D array? Actually 3D array को visualize करना tough है, but फिर भी करके दिखाता हूँ एक मिनट. हाँ, तो you can see this particular thing. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहला लिस्ट चालू हो रहा है, उसके अंदर एक और लिस्ट चालू हो रहा है, उसके अंदर एक लिस्ट चालू हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 कंसेक्यूटिव लिस्ट चालू हो रहे हैं विदाउट एंडिंग. ठीक है, फिर यहाँ पे ये लिस्ट एंड हो रहा है, फिर वापस एक लिस्ट एंड हो रहा है, फिर 2D लिस्ट का पहला एलिमेंट एंड हो रहा है, फिर एक और 2D एलिमेंट हो रहा है. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा लिस्ट है जिसके अंदर 2 छोटे लिस्ट है, और इन 2 छोटे लिस्ट के अंदर भी 2 छोटे लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. हाउ टू इंसर्ट इन 2D एंड 3D एरे. ओके, हाँ, ये भी हम एक बार देख लेते हैं. हाउ टू इंसर्ट इन 2D एंड 3D एरे. तो यहाँ पे मैंने एक 3D एरे बना लिया, मैंने इसको रन कर लिया. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3D एरे के लिए हम हमेशा 3 इंडेक्सेस यूज करते हैं. तो यहाँ पे मैं 1,1,1 करके इसे रन करता हूँ. ठीक है, तो हमें 11th एलिमेंट मिल गया. मतलब ये 1,1,1 वाला एलिमेंट है. अगर इसमें मैं 90, अच्छा इंसर्ट भी यूज करना है, रुको वो भी हेल्प करता आपको. इसको मैंने रन किया और इसके बाद अगर मैं ARR को रन कर दूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ 11 की जगह भी हमने रिप्लेस कर दिया है 9 के साथ. एंड नाउ इंसर्ट फंक्शन ना, वो भी एक मिनट में कर लेता हूँ. ARR और 1 सेकेंड ना, मैं भी क्लियर कर लो एक सेकेंड डाउट. इंसर्ट द थिंग इज कि एक 2D और 3D एरे में इंसर्ट करना टफ है. उसका रीज़न ये है कि जो शेप है वो आप चेंज नहीं कर सकते 2D एंड 3D एरे का. जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि वो एरर देगा. ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे शुड हैव द सेम शेप. मतलब सबसे छोटे के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो सबसे छोटे वालों के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट होने चाहिए. तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर केस में 2D और 3D एरे में. सो क्षितिज, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. अगर करना ही है तो then you'll have to flatten पहले, हाँ, then you यस. can insert then reshape again. हाँ, यू कैन रीशेप दैट पर्टिकुलर इनटू अ 1D एरे. देन आप उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको उसको 3x3 के शेप में करना है तो आपको 3 एलिमेंट इंसर्ट करने पड़ेंगे एट अ गिवन इंडेक्स, और फिर आप उसको वापस रीशेप कर सकते हो. ओके, तो मेरे को लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा क्षितिजा. हाँ, यू कैन जॉइन द कमिटी. वेदांत, लिंक शेयर कर देना हाँ कम्युनिटी. हाँ शायद एक मिनट. रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो. हमारे फ्यूचर में भी इवेंट्स होंगे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. इफ एनीवन हैज एनी अदर डाउट इसको लेके या फिर आगे वाले सेशंस को लेके, कुछ भी डाउट है, यू कैन क्लियर इट हियर.
Okay, then I guess आज का session we can end it today. So you guys can leave if you want to. And one more thing, कल day 4 है and tomorrow we'll be starting with matplotlib. So guys, जो भी अभी मीट में सुन रहा है, आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेंड कल का सेशन बिकॉज तुमको कल पता चलेगा द रियल पोटेंशियल ऑफ पाइथन बिकॉज tomorrow you'll get to know how you can draw or generate charts, different types of graphs using Python and Matplotlib. So कल आना है, सबको आना है, तुम लोग कल genuinely enjoy करने वाले हो, सब लोग बहुत enjoy करने वाले हो कल. Okay. So yeah, see you guys tomorrow at the same time, 7 p.m. Okay, you guys can meet. MATLAB and